हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग स्टडी विद प्रखर। आज हम डील करेंगे एक दूसरी पोइट्री, स्पेशली बीए थर्ड ईयर का पोइट्री जो तुम लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं प्रखर त्रिपाठी 011, पेन डेटिंग अ पेपर प्लांट मोर ट्रीज। टेलीग्राम ग्रुप है द लेट ओइसिस और द कॉन्टैक्ट नंबर इज 9336903429। टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है तुम्हारे एमए के लिए इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गेस्ट पेपर भी बताऊंगा। एमए में भी मैं गेस्ट पेपर बता देता हूँ, तो ठीक है, आ जाना। कैसे आना है, कम्युनिटी सेक्शन से जा करके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहाँ पे लिंक पोस्टेड है। एमसीक्यूज ऑन वाइस फर्स्ट बाई अमीरी बराका, वहाँ पे ऐसे करके लिखा होगा, लेकिन मैंने इसको फर्स्ट कर दिया ताकि इंटरप्रिटेशंस में आसानी हो। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ वॉइस आई या वॉइस फर्स्ट? वैसे तो इसको वॉइस आई नहीं पढ़ते हैं, वॉइस फर्स्ट कहते हैं। और कुछ चीजें जो बता दूं मैं कि जो मेरा इस पे पोस्टेड वीडियो है वहाँ पे WISH लिखा हुआ है, WISH। तब मैं जिससे पीडीएफ बनाया करता था वो लिटरेचर बैकग्राउंड से नहीं था बेचारा, तो उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है। मैंने री एडिट भी नहीं करा है, मैंने जो मुझे मिला मैंने चढ़ा दिया, मैंने अपलोड मार दिया। चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोम? नेचर एंड ब्यूटी, लव एंड सेपरेशन, कल्चरल इरेजर एंड ऑपरेशन, टाइम एंड इटर्निटी। Cultural eraser, operation, time and eternity. Do you know the answer? C is the correct option. The phrase your own language in the poem symbolizes. The phrase your own language in the poem symbolizes English language, poetry, cultural identity and heritage, political slogans. Cultural identity and heritage is the correct answer. What happens when they ban your own boom ba boom? Your music is celebrated, your culture is silenced, you become powerful. Your culture is silenced. What does the phrase boom ba boom most likely to refer? What does the phrase boom ba boom most likely to refer to? Explosions in the war, drum rhythms and African musical heritage, animal sounds, marching footsteps. Drum rhythms and African musical heritage is the correct answer. What happens when the enemies won't let you speak in your own language? What happens when the enemies won't let you speak in your own language? You become a poet, you are praised, you are in deep trouble, you become multilingual. Okay, then we are proceeding. The destruction of statues and instruments in the poem symbolizes urban renewal, artistic evolution, cultural suppression, religious change. थोड़ा सा अच्छा मैंने आंसर हाइड किया है और उसमें वो मिट गया है। Cultural suppression is the correct answer. Which African American spiritual is referenced in the poem's subtitle? Which African American spiritual is referenced in the poem's subtitle? पोम के सबटाइटल भी हैं, डू यू नो दिस? अगर नहीं पता है तो आफ्टर दिस क्वेश्चन यू विल नो इट। कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं आता कोई बात नहीं है, बहुत सारी चीजें मुझे भी नहीं आती। वी आर लर्नर्स, वी आर स्टूडेंट, हम धीरे धीरे सीखेंगे। स्विंग लो, स्वीट चैट्रियट, इसको चैरियट पढ़ना चाहिए था वैसे। Nobody knows the trouble I have seen. Go down, Moses, wade in the water. Nobody knows the trouble I have seen. What does the line "you in deep, deep trouble" emphasize? You in deep, deep trouble emphasize. Joy, repetition and urgency, victory, isolation. Joy, repetition and urgency, victory, isolation. Repetition and urgency is the correct answer. The poem uses unconventional spelling and punctuation too. The poem uses unconventional spelling and punctuation too.
create confusion, break grammar rules, reflect spoken word and jazz rhythms, mimic children's speech, reflect spoken word and jazz rhythms. The interjection hump in the poem shows. The interjection hump in the poem shows humor, defeat, sarcastic frustration or irony, joy. Sarcastic frustration or irony is the correct answer. According to the speaker, how long might it take to get out of this trouble? According to the speaker, how long might it take to get out of this trouble? Several hundred years, a few weeks, 10 years, several hundred years, never. What type of poem is vice first? It is a sonnet, limerick, protest poem या poem या फिर epic. It is a protest poem. Which poetic technique dominates this poem? Which poetic technique dominates this poem? Regular rhyme and meter, satire and symbolism, allegory या फिर romanticism. There are different pronunciation for the same word. Satire and symbolism is the correct answer. Question छूट गया है ना? What is the tone of the poem? Important question है. Make a star over here. What is the tone of the poem? Nostalgic and romantic, calm and hopeful, urgent and critical, humorous and light. Urgent and critical is the correct answer. The poem critiques which of the following? The poem critiques which of the following? Environmental pollution, war and technology, cultural colonization and systemic erasure. C is the correct answer. Which literary device is used in the phrase probably take you several hundred years to get out? Simile, hyperbole, irony, alliteration. देखो बढ़ा चढ़ा के बोल दिया several hundred years, तो it is hyperbole. Amiri Baraka was associated with which movement? Imagism, Ezra Pound और एमी लोवेल इमेजिज्म से ताल्लुकात रखते हैं. और हार्लेम रेनेसांस, ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट, रोमांटिसिज्म. अच्छा, तुम्हारे मन में सवाल होगा कि मैंने हार्लेम रेनेसांस नहीं बताया, मैंने रोमांटिसिज्म पे बहुत जोर नहीं दिया, इमेजिज्म पे क्यों जोर दिया? तो याद रखो, तुम्हारे फर्स्ट सेम में अमेरिकन लिटरेचर्स का ये पार्ट है. इमेजिज्म इंपॉर्टेंट है, हार्लेम भी पार्ट है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर द फर्स्ट सेम. मैं तुम्हें लंबी लड़ाई के लिए तैयार करना चाहता हूँ. ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट इज द करेक्ट आंसर. The destruction of instruments in the poem also suggests the silencing of jazz and black musical expression, pop music, classical European music, military marches. Jazz and black musical expression is the correct answer. The enemies in the poem represent animals, mythical creatures, oppressive cultural and political systems, criminals. Oppressive cultural and political systems या symbols are the correct answer. Why does the poem use sound like phrases such as boom ba boom? Why does the poem use sound like phrases such as boom ba boom?
to entertain, to mimic war, to reference African musical roots and rhythm, to confuse the readers. दा होना चाहिए वैसे वहां पे, लेकिन ठीक है, no worries. To reference, used as a reference to African musical roots and rhythm. अभी तक आप देख रहे थे, you are watching Study with Prakhar. The Instagram handles are Prakhar Tripathi 011 pen dating a paper, plant more trees. The Telegram group is the Lit Oasis. कहाँ से ज्वाइन कर सकते हो? कम्युनिटी सेक्शन से ज्वाइन कर सकते हो. The contact number is 9336903429. Do share your problems. फिलहाल तो अभी मैं बिजी चल रहा हूँ, अपने ही बैच के बच्चों को मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ ड्यू टू सम रीजंस. बाय द टाइम आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, एक दो दिन के अंदर अंदर या फिर कल ही तक मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, बट स्टिल कल के बाद अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कॉल कर सकते हो.